Hello student, I am Hemant sir and today we are going to start the new chapter of your subject science. In our ninth class of state board we have the measurement of matter. The name of the chapter is measurement of matter. So before going to start the chapter we will have to understand what is matter. So what is matter? So matter is anything that have mass and occupied space. मैटर वो हर चीज है जिसका मास है और जो जगह घेरता है. Is it? So what is matter? It is the object or anything which have mass and occupied space, and we can also perceive with our senses also. ऐसा मैटर क्या एक्चुअल में? इट इज एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है जिसका मास होगा, जो जगह घेरेगा और जिसको हम अपने सेंसेस से परस्यू भी कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं. ऐसे वो सब कुछ को हम बोलते हैं मैटर. लाइक द पेन, it is also matter because it has a mass and it occupies the space also, and we can sense also, we can touch. That means we are sensing this pain, that's why it is a matter. The air around us is nothing but matter. Our whole body which is also made up of the matter, and we are occupying the space also, and we have the mass. That means our body is also a matter. So anything around you is matter, because all the objects that you see are nothing but matter, because they have mass as well as they occupied space. Our earth itself is a matter. हमारी जो अर्थ है ये भी अपने आप में एक मैटर है, because earth है the mass and it occupies space on the space, and जगह गिर रही है हमारे यूनिवर्स में. Is it? Okay. So हमारा चैप्टर है द मेजरमेंट ऑफ मैटर. सो हम अब मेजर कैसे करेंगे हमारे मैटर को. सो in this chapter we will study about the law of chemical combination, कि chemical reaction actual में कैसे proceed होती है, how different elements they combine to form a product. ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Then we will understand about the atoms, shape of the atoms, mass and valency of the atoms. Okay. Then we will understand about the molecular mass and mole concept. It is very important because it is going to use in your next standard also. Okay. So this is all about the chapter. And last but not the least, we will understand about the radicals. What are radicals? Like we have acidic radicals, basic radicals, and we have neutral radicals that we are going to understand at the end of this chapter. Okay. So now we are going to start the chapter now. Okay. So first we have the recall in your chapter. The first question in your recall section have what is the Dalton's atomic theory. So in Dalton's atomic theory already you have studied in your previous standard in 8th class. So Dalton atomic theory says the atom which have the mass at the center, that is nothing but the nucleus, and the negatively charged particles they revolve around the nucleus, and these negatively charged particles are nothing but electrons. Okay, so this is all about Dalton's atomic theory. Then second question we have how the compounds are formed. You have seen there are many different types of compound around us and we are using every day in our life, like sodium chloride, the salt that we are using in our daily diet. हम रोज अपने खाने में सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, हम उसको यूज करते हैं. सो एक्चुअल में टेबल सॉल्ट फॉर्म हुआ कैसे, है ना. सो देयर इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट्स विद ईच अदर बाय गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, and they form sodium chloride, which is a very necessary and important compound for our life. So this is the chemical reaction where different elements and compounds they combine or they break down to form the different product. This is the process by which different compounds are formed. Then we have next question, what are the molecular formula of the salt. So the molecular formula of salt is designed, we will understand by this example. Like we have sodium
and chlorine. Sodium is the metal and chlorine is the non-metal. So it is the compound and it is nothing but the representation of compound. It is sodium and chloride. It is a chlorine, but when we are writing the name, we are writing as sodium chloride. So when we will write the name of any molecule, we have to write the name of positive species first. See, सोडियम क्या एक्चुअल में ये मेटल है. अब मेटल है सो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू एक्वायर स्टेबिलिटी. एंड क्लोरीन, जिस इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने लूज किया है, दिस क्लोरीन इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन. अब जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. So sodium is positively charged species and chlorine is negatively charged species. So जब भी हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, सो पॉजिटिव स्पीसीज का नाम पहले लिखेंगे एंड देन फॉलोड बाय द नेगेटिव स्पीसीज. और इसका नेम भी हम ऐसे लिखेंगे, पॉजिटिव स्पीसीज का फर्स्ट एंड फॉलोड बाय द नेगेटिव स्पीसीज. सोडियम क्लोराइड. ओके, वी विल टेक वन मोर एग्जांपल. वी हैव MgCl2. It is magnesium chloride. Here magnesium is a metal which lose electron to form positive ion, and chlorine will gain electron, will form negative ion. That means so magnesium और chlorine दोनों कैसे डिफरेंट चार्ज स्पीसीज है. तो हमने नाम कैसा लिखा है, रिप्रेजेंट किया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में. मैग्नीशियम यानी पॉजिटिव पहले, क्लोरीन बाद में. नाम भी कैसा लिखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड. So this is the way molecular formula and molecular names are written. Okay, so this is all about the recall which is given in your section, page number 46. So now we will understand about the laws of chemical combination. Okay, so we have different laws of chemical combination where different elements they react to form the product. Okay, so first law we have the law of conservation of matter. The law of conservation of matter. This is the first law of the chemical reaction. So what is law? The law of conservation of it is matter. The law of conservation of matter. That means when two or more than two different reactants they reacting to form a single product or maybe more than one product, then the amount of matter is conserved. The amount of matter is going to be conserved during the chemical reaction. It says there is no gain and no loss of the matter during the chemical reaction. It is the law of conservation of matter. The law says, we will understand by the example. So we have taken the example. We have 1 mole of sodium. We are taking as sodium. We know the atomic mass of sodium, which is 23 AMU. What is AMU? It is atomic mass unit, or you can represent by nu also. It is the unified mass. Both names are different but the meaning is same. Okay, so we know the atomic mass of sodium is 23 AMU, or you can say unified mass. It is going to react with chlorine, and chlorine have atomic mass 35 AMU, 35.5 AMU, or you can say unified mass. Okay, they are going to react to form a single product called sodium chloride. So mass of sodium is 23, mass of chlorine is 35.5. So see, chlorine we are taking in a molecular form. So here we have to multiply by 2 coefficient because we will require only 1 chlorine. So we have taken half of chlorine gas, half mole of chlorine gas and 1 mole of sodium, like this. Okay, so the total mass of the reactant will be, it is 0.5, then 5 and 3 is 8 and 3 is 2 is 5. That means 58.5 AMU is the amount of matter that we have used in chemical reaction of the reactant. Now we will check the amount of matter which is formed in product. So we know the
mass of sodium is 23 and mass of chlorine is 35.5. If we will add both, we will get 58.5 AMU or unified mass. So see, the total matter in a reactant is always equals to the total matter of the product, or we can say the total mass of reactant always equals to the total mass of product. Okay, so here it is, and we understood that the law of conservation of matter, that means the matter neither be created nor be destroyed during the chemical reaction. The mass of reactant is always equals to the mass of product. Okay, when there is a condition, when all the matter of the reactant which is consumed in chemical reaction to form product, then the total mass of reactant always equals to the total mass of product. Okay, so this is all about the law of conservation of mass. So the law of conservation of matter, which is given by the French scientist called Antoine Lavoisier, and it is given in 1785. ये बहुत पुराने समय की बात है. एंटोनी लिवोजियर, जो आज केमिस्ट्री का फादर के नाम से भी जाने जाते हैं. द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज नथिंग बट आवर एंटोनी लिवोजियर. उन्होंने ही हमको द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर दिया था इन 1785 में. Okay, so now we are going to understand about the next law of chemical combination. So the next law of chemical combination, we have the law of constant proportion. The law of constant proportion. The law of constant proportion. So the law of constant proportion, here you have to concentrate. The constant proportion का मतलब, if any element it is going to react with other element, it will react in a particular proportion only. Like water की अगर हम बात करें, okay, so we know the molecular formula of water is H2O. अब H2O में on the basis of the ratio of the atoms, we have 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. That means their ratio is hydrogen H2 oxygen H2 2H2 1. Means hydrogen के 2 एटम and oxygen का 1 एटम दोनों कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे वाटर. So this ratio is on the basis of number of atoms. Now we will understand the ratio on the basis of their atomic mass. So we know atomic mass of hydrogen is 1, but here 2 atoms are used, so the mass of 2 atoms will be 2 AMU, atomic mass unit. And we know oxygen atom we are using 1 only, and the mass of oxygen is 16, so 16 into 1, that is 16 AMU. So अगर हम दोनों का रेशो निकालेंगे तो रेशो क्या हो जाएगा, इट इज 2s2 इसको सिंपल फॉर्म में जो हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 1s2 8. Therefore the ratio of their masses, so हाइड्रोजन का मास H2 ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का रेशो कितना है 1, H2 ऑक्सीजन का कितना है 16. That means when water is going to form by the hydrogen and oxygen, then 8 part of the oxygen and 1 part of the hydrogen they are going to react. Okay, or we can say 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen they are going to react to form water. Okay, so ये water का सैंपल हमने हमारे घर में जो ट्यूबवेल है उसका ले लिया, तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला है H2O. देन हमने ओशन का वाटर लिया, समुद्र का पानी, देन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर ऑफ ओशन विल बी H2O. ये चेंज होगा क्या, नहीं होगा.
हमने लेक वाटर ले लिया, डैम वाटर ले लिया, रेन वाटर ले लिया, अब कहीं का भी वाटर का सैंपल ले लो, वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा. ओके, सो इन एनी केमिकल रिएक्शन व्हेन एटम्स, two or more atoms, they are combined to form the compound, then they react with the particular proportion of the atoms. Okay, like we have water molecule here, the proportion of hydrogen and oxygen will be constant, same, and the law is the law of constant proportion. So different atoms, when they are going to react to form a product, they react with a particular proportion only or constant proportion only. Okay, so this is all about the law of constant proportion. Okay, so the law of constant proportion was given by the French scientist called J.L. Proust. J.L. Proust ने हमको the law of constant proportion बताया था. When? In 1794 में. Okay, and this law is really very important. Okay, so we will understand one more example, like the formation of carbon dioxide, CO2. कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए हमने डिफरेंट प्रोसेसेस अप्लाई किया. लाइक हमने ले लिया मीथेन गैस, इट इज CH4. मीथेन गैस को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया. ओके, सो मीथेन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा और क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब यहां पर हाइड्रोजन कितने 4 और यहां पर कितने ओनली 2. हम क्या करेंगे, इसको 2 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 2s आर 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड. कार्बन वी हैव 1, ऑक्सीजन चेक करते हैं, यहां पर है 2 और यहां पर 2 और 2 4. दैट मींस इस साइड में है 4 ऑक्सीजन और इधर में ओनली 2. सो यहां पर हम 2 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो नाउ आवर रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ओके, सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है, कैसे फॉर्म हुई है, बाय द बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, बाय द बर्निंग ऑफ मीथेन गैस. नाउ अब हम नेक्स्ट सैंपल से या नेक्स्ट रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेंगे. लेट वी हैव कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. और ग्रेफाइट को हमने बर्न किया इन एक्सेस ऑफ एयर, एयर यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने कार्बन को बर्न किया. कार्बन किस फॉर्म में लिया हमने, ग्रेफाइट के फॉर्म में. जब ग्रेफाइट, दैट मींस कार्बन, इट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, व्हेन गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हम उसको हीट करेंगे, बर्न करेंगे, अगेन इट इज गोइंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, it is going to form carbon dioxide. So these are the two different carbon dioxide formed by the different processes. बट हम चेक करेंगे अब दोनों कार्बन डाइऑक्साइड जो अलग अलग प्रोसेस से फॉर्म हुए, इनमें जो प्रोपोर्शन है कार्बन और ऑक्सीजन का वो कांस्टेंट है या नहीं है. वी विल चेक नाउ. सी कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12. कितना है, 12. इट इज द मास ऑफ कार्बन. ऑक्सीजन के 2 एटम है, सो ऑक्सीजन इंटू हम 2 करेंगे क्योंकि हियर वी हैव 2 एटम्स. सो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16. सो वी हैव टेकन 16 इनटू नंबर ऑफ एटम 2, सो वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 12 कितना हो जाएगा, 32. 12 कितना हो जाएगा, 32. हम इसको और भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं. सो 4 3s आर 12 एंड 4 8s आर 32. सो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा, कार्बन रेशियो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 3:8. ओके, सो here the mass of carbon and oxygen, their ratio is 3:8. That means when carbon dioxide going to form, they always react with a fixed proportion of 3:8. ये चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. Here we can form carbon dioxide by any different processes. We will get carbon and oxygen, their proportion will be fixed. Okay, so this is all about the law of constant proportion. So let's define one more the law of constant proportion. It states that when a different element they are going to combine to form a product, they always react with a particular proportion or fixed proportion. Okay, so this is all about the law of constant proportion. So here we are completing our today's session.
ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज डू रिपीट दिस वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको रिपीट करके फिर से देखिएगा। इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन द डाउट सेक्शन विच इज गिवन इन योर क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, which is given side of your description box. Okay, so bye for now.